Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear students, viewers, our today's topic is related to the environmental laws. You should know that Government of India has enacted a number of acts, rules and directives from time to time to protect natural resources from human interference and manipulation. These environmental laws must ensure the sustainable development. Some of the environmental laws enacted by India are, for example, Indian Forest Act, the Wildlife Act, the Atomic Energy Act, the Water Prevention and Control of Pollution Act, the Air Prevention and Control of Pollution Act, the Environment Protection Act. So we are going to study some of the main features or salient features of some of the environmental laws in today's lesson and also in coming lessons, inshallah. So our today's topic is the salient features of the Environment Protection Act 1986. So dear students, let's move on to our topic. So dear students, our today's topic is Environment Protection Act 1986. Okay. Environment Protection Act is also abbreviated as EPA. E means environment, P means protection, A means act. And as this act received the assent of the President of India in the year 1986, so it is written as Environment Protection Act EPA 1986. Okay. In our today's this topic, we are going to study only the salient features of this act. Okay, it is a very long topic. This Environment Protection Act 1986 is a separate booklet. It's a separate booklet. Okay, so according to your level, we're not going to study the whole booklet. Rather, we are going to know the salient features or some of the characteristics of this act. Okay, this is in accordance with your level and the syllabus provided to you by the Jammu and Kashmir Board of School Education. This is a very important act. This act received the assent of the President of India on May 23, 1986 and was published in the Official Gazette of India Extraordinary. This is an act to provide for the protection and improvement of environment and for matters connected therewith. Okay, dear students, here it goes. This act is enacted under Article 253 of Constitution of India to implement the decisions made at the United Nations Conference on Human Environment held at Stockholm in 1972. Dear students, you should remember that United Nations General Assembly decided to convene in 1972 Christian era a global conference in Stockholm whose principal purpose was to serve a practical means to protect and improve human environment
and to remedy and prevent its impairment. Okay, and now you should also know that what does this Article 253 here mean? Article 253 of the Constitution, it is mentioned in the Constitution of India. Okay, it provides Indian Parliament with power of making laws in accordance with India's international obligations. Okay, so यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने डिसाइड किया कि वो एक मीटिंग कन्वीन करेंगे स्टॉकहोम में, एक जगह का नाम है स्वीडन में, ठीक है, 1972 में, जिसका प्रिंसिपल एम क्या था उस मीटिंग का, उस कॉन्फ्रेंस का, ग्लोबल कॉन्फ्रेंस का जो प्रिंसिपल पर्पस क्या था कि हम कैसे प्रैक्टिकली हम कैसे अपने इस ह्यूमन इन्वायरमेंट को कैसे बचाएंगे, उसको कैसे इम्प्रूव करेंगे, इसकी खराबियों को हम कैसे ठीक करेंगे, कैसे बचाएंगे, ये इसका मेन फोकस था, इसका प्रिंसिपल पर्पस यही था, ठीक है। सो डियर स्टूडेंट्स, India participated in this conference, and in order to fulfill its commitment at the conference relating to the protection and improvement of environment and the prevention of hazards to human beings, other living creatures, plants, property, passed the aforesaid enactment. तो हिंदुस्तान ने एक्ट पास किया उन कमिटमेंट्स को फुलफिल करने के लिए जो उन्होंने लिए थे उस कॉन्फ्रेंस में, ठीक है, उन कमिटमेंट्स को पूरा करने के लिए जो उस कॉन्फ्रेंस में हिंदुस्तान ने जो है लिए थे, ठीक है। कौन सी कॉन्फ्रेंस हम आपको बताइए अभी? यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट हेल्ड एट स्टॉकहोम इन 1972। ओके, तो इसका क्या मकसद था? प्रोटेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ एनवायरनमेंट and the prevention of hazards to human beings, other living creatures, plants and property. Okay. Now, what are the objectives of this act? The first objective is to implement the decisions which were made at the United Nations Conference on the Human Environment held at Stockholm in June 1972, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया। और दूसरा जो इसमें है वो है टू प्रोवाइड फॉर द प्रोटेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉर मैटर्स कनेक्टेड देयर विथ, यानी प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट एंड इट्स इम्प्रूवमेंट और जो इसके मुतलिक मामलात हैं, मसाइल हैं। तीसरा, द थर्ड वन इज कोऑर्डिनेटिंग द एक्टिविटीज ऑफ वेरियस रेगुलेटिंग एजेंसीज विच आर डन अंडर द एग्जिस्टिंग लॉ। फोर्थ वन इज प्रोवाइडिंग डिटरेंट पनिशमेंट to those who inculcate in endangering the human environment, safety and health, यानी इबरतनाक सज़ा उन लोगों को देना जो ऐसे कामों में इन्वॉल्व हों जिनसे हमारे इन्वायरमेंट को खतरा हो, हमारी सेफ्टी को खतरा हो और हमारी हेल्थ को खतरा हो। फिफ्थ वन इज टू इनएक्ट जनरल लॉज फॉर इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, यानी नाफिज करना जनरल लॉज इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए, माहौल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, which could be unfolded in areas of severe environmental hazards. देखिए dear students, here in this slide we'll study some definitions of the act. देखिए जब भी कोई एक्ट किसी खास डोमेन में जब बनाया जाता है, जैसे वो चाहे वो एयर पोल्यूशन हो, चाहे वो एक्ट वाटर पोल्यूशन के मतलब हो, हाँ, चाहे वो पोल्यूशन मैरीन, चाहे वो एक्ट मैरीन पोल्यूशन के लिए हो, तो वहाँ पर कुछ टेक्निकल टर्म्स उसमें आती हैं। तो ये जो टेक्निकल टर्म्स हैं उनको बयान करना एक्ट बनाने वाले के लिए भी जो है बहुत ज़रूरी है। So here are some definitions of the act. The first definition is environment.
So what does environment mean according to Environment Protection Act? Environment includes water, air, land, and the interrelationship which exists among and between water, air, and land, and human beings, other living creatures, plants, microorganisms, and property, as you have already studied in my previous lessons. The second definition is the second phrase is environmental pollutant. What does this environmental pollutant mean according to this act? It according to the act means any solid, liquid, or gaseous substance present in such concentration or as may be or tend to be injurious to environment. ठीक है, ये सॉलिड लिक्विड या गैसियस सब्सटेंस जैसे कि मैंने आपको पिछले लेसन में बताया है इन्वायरमेंट पोल्यूटेंट, तो जिससे हमारे इन्वायरमेंट को नुकसान लायक हो सकता है. Then another definition here is it's environmental pollution. So what it means according to the act means the presence in environment of any environmental pollutant. किसी भी environmental pollutant का environment में पाया जाना उसको environmental pollution कहते हैं. ठीक है. Hazardous substance. What does it mean according to the act? Means any substance or preparation chemical, for example, which by reason of its chemical properties or handling is liable to cause harm to human beings, other living creatures, plants, microorganisms, property, or the environment. Hope you may have understood my explanation. So according to this act, the central government shall have the power to take all such measures as it deems necessary or useful for the purpose of protecting and improving the quality of environment and preventing, controlling and decreasing environmental pollution. सेंट्रल गवर्नमेंट को ये पावर्स हैं कि वो ऐसे इकदाम उठाए, ज़रूरी इकदाम उठाए जो उसको ठीक लगे, ज़रूरी लगे, बहुत यूज़फुल लगे, ताकि किसके लिए, इन्वायरमेंट को बचाने के लिए, इसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए, तो इसी तरह इन्वायरमेंट पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए, कम करने के लिए, या इन्वायरमेंट पोल्यूशन से जो है पोल्यूशन से इस माहौल को इन्वायरमेंट को बचाने के लिए, ठीक है, जो भी इकदाम हैं, तो सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर्स हैं कि ऐसे कानून बनाए, ऐसे स्टेप्स इकदाम उठाए. नो पर्सन कैरिंग on any industrial operation or processes shall discharge or emit any environmental pollutants or permit to do so in excess of such standards as may be prescribed. ठीक है, कोई भी आदमी या कोई भी इंडस्ट्री जो ऑपरेट करती है, ठीक है, या प्रोसेसिंग का काम कुछ करती है, नहीं डिस्चार्ज करेगी कोई भी environmental pollutant, ओके, और परमिट टू डू सो इन एक्सेस ऑफ सच स्टैंडर्ड्स. तो कोई स्टैंडर्ड है कि स्टैंडर्ड के तहत जो है, उन स्टैंडर्ड्स के तहत जो लेड डाउन बाय द कंट्री, बाय द गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री, तो उस स्टैंडर्ड्स के मुताबिक ये काम करेंगे. The third one we have, no person shall handle or cause to be handled any hazardous substance except in accordance with such procedure and after complying with such safeguards as may be prescribed. Okay, again, so the central government or any officer empowered by it shall have power to take for the purpose of analysis sample of air, water, soil, or other substance for any from any premises, factory as may be prescribed. Okay, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जो हैं, जो अथोराइज होंगे, वो सैम्पलिंग के लिए, एनालिसिस के लिए जो है एयर, वाटर या कोई जो रिलेटेड सैंपल है ले सकते हैं प्रेमिसेस से. The fifth one is, whoever fails to comply with or violate any of the provisions of this act or the rules made or orders or directions issued there under shall, in respect of each such failure or violation, be punished with imprisonment or with fine or with both.
तो इससे क्या होता है कि अगर कोई आदमी कानून की खिलाफ वर्जी करे तो कानून या रूल्स या ऑर्डर्स या डायरेक्शंस जो दिए जाते हैं गवर्नमेंट की तरफ से, लॉ बॉडीज़ की तरफ से, तो इस वायलेशन में उसको सज़ा दी जा सकती है, उसको कैद भी किया जा सकता है, उसको जुर्माना तक भी भरना पड़ेगा। तो हम ये देखते हैं कि थोड़ा सा लेट्स हैव अ लुक a bird's eye on the what kind of punishment for is for the offenders. Punishment for offenders: any person who is not complying with the provisions of the act, जो भी कानून की खिलाफ वर्जी करता है, जो एक्ट में जो डायरेक्शंस दी गई हैं उसके खिलाफ वर्जी करता है, or the rules made hereunder thereunder or any set of directions thereof will make him punishable under the act. तो इसमें जो है उसको सज़ा मिलेगी, इस एक्ट को जो है इस कानून की खिलाफ वर्जी करने वाले को सज़ा मिलेगी। तो ये सज़ा, इसकी हद कहाँ तक जा सकती है, ये सज़ा, ये जो है इसकी सज़ा जा सकती है 5 साल की कैद तक जो है इसकी सज़ा जा सकती है। ठीक है, तो या तो उसको देना पड़ेगा 1 लाख रुपये जुर्माना, या तो दोनों, यानी कैद भी और जुर्माना भी। और अगर फिर वो दोबारा फेल होता है और कंटिन्यू ये काम करता है तो फिर उसको 5,000 रुपये देने पड़ेंगे पर डे। Who can file a complaint? Another concept here. Who can file a complaint? यानी शिकायत कौन दर्ज कर सकता है? A complaint can be filed under this act by 2 parties. 2 पार्टी ये complaint फाइल कर सकती हैं. The first one is the central government or any authority or officer authorized in the behalf of that government. ठीक है, ये कर सकता है. अगर ये नहीं तो any person who has given notice of not less than 60 days of the alleged offense and of his intention to make complaint to the central government or the authority or officer authorized as aforesaid. So, who has the power to delegate and make rules? The Act 202 empowers the central government to make rules for carrying out the purpose of the act. Okay, every rule made under the Environment Act is required to be laid before each house of the parliament. ठीक है, तो जो 2 हाउस हैं पार्लियामेंट हैं, दोनों हाउस के से पास ऑन होनी चाहिए, उसके सामने पेश किए जाएंगे ये जो भी रूल बनाया जाएगा. हाँ, तो रूल्स कैन बी एक्सेप्टेड, मॉडिफाइड और रिजेक्टेड. एक्सेप्ट किए जा सकते हैं, उनको चेंज भी किया जा सकता है, इनको रिजेक्ट भी किया जा सकता है. कौन करेगा रिजेक्ट? बाय बोथ हाउस ऑफ बाय द बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट. पार्लियामेंट की जो दोनों हाउस हैं ये इनको एक्सेप्ट भी कर सकते हैं, मॉडिफाई भी कर सकते हैं, रिजेक्ट भी कर सकते हैं. ओके, दिस इज फॉर टुडे. फी अमानिल्लाह.